Hello students, today's topic is intersection point of two lines from 3D chapter. It is very important topic. Now, here written as questions. Show that the lines vector r equal 3i plus 2j minus 4k plus lambda I plus 2j plus 2k and vector r equal 5 minus 2j plus mu 3i plus 2j plus 6k are intersecting. Hence, find their point of intersection. Okay, let's start. What is condition of intersection of two lines? So now write down, if shortest distance of equal 0, then lines intersects. Okay, so shortest distance, you know formula of shortest distance. What is formula of shortest distance? C minus vector A dot B cross D divided by its magnitude B cross D is equal to 0. Means C minus A dot B cross D equal 0. Main concept is this: C minus A dot B cross D equal 0 when taking our cross multiplication. So if shortest distance equal 0, then lines intersects and C minus A dot B cross D equal 0. केवल आपको ये चीज़ याद रखना है. ये तो आपको डिराइव करके बताया गया, बट आपको लर्न केवल ये चीज़ करना है. तो दिस देन लाइन्स intersects या कोप्लेनर. That means vector B not equal to vector D. Okay, lines intersect are coplanar. Vector B not equal to vector D. So now find out C, A, B and D. Line has given, two lines has given. Write down it is first line and it is second line. Now write down what is A. A is position vector of first line, 3i plus 2j minus 4k. 3i plus 2j minus 4k. And vector B is direction vector, I plus 2j plus 2k. It is direction vector. Now write down vector C, position vector of second line, 5 minus 2j, 5 minus 2j, and this is vector D. Vector D is 3i plus 2j plus 6k. So now write down C minus A. C 5 minus 2j minus A 3i plus 2j minus 4k. Now solve it. 5 minus 3, 2i minus 2j minus 4j and minus plus 4k. It is C minus A. Now write down B cross D. B cross D you have to find using determinant. Write down first row I, j, k and second row component of direction vector. Here is no any number, so you have to write here 1, 2, 2 and second 3, 2, 6 and solve it. I 2 6 are 12, 12 minus 4 minus j 6 minus 6 plus k 2 minus 6 12 minus 4 8i minus 0j minus 4k. Okay, now write down magnitude of B cross D. Magnitude, you know, write down under root and then square of the component, sum of square of the component. So write down 8 square plus 0 square plus minus 4 square. 8 square 64 plus minus plus 16 will be 80.
it is component, but it is not required. Okay, it is not necessary. Only C minus A and B क्रॉस D, ये दो चीजें केवल जरूरी है, इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो ओनली यू हैव टू राइट डाउन C माइनस A डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस D. C माइनस A 2i माइनस 4j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस D 8i प्लस माइनस 0j माइनस 4k. अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i विद i, j विद j एंड k विद k. बेटा लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट के क्या रूल्स हैं. तो आपको बस जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं. i विद i, तो 2 8 जा 16 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 16 मीन्स इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स लाइन्स, हेंस लाइन्स इंटरसेक्ट. ये तो प्रूफ हो गया कि लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे. अब इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों ही लाइन को पहले हम प्रॉपर लिख लेंगे. तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट बोथ लाइन, कंपेयरिंग बोथ लाइन. ओके, कंपेयरिंग बोथ लाइन, दोनों लाइंस को हम कंपेयर कर लें. तो आर इक्वल 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k. Now lambda I with I you have to take, j with j and k with k. तो 3 plus 1, here no numbers is here, that means 1. तो 3 plus lambda I, 2 plus 2 lambda, 2 plus 2 lambda. Now next you have to put here plus, but minus sign will take inside the bracket. Minus 4 plus 2 lambda equal. Similarly here 5 plus 3 mu I minus 2j plus sign here minus 2 plus 2 mu plus 6 mu k. Okay, now comparing on both side, 3 plus lambda equal 5 plus 3 mu means lambda equal 2 plus 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 plus 3 mu. It is equation number 3. Next 2 plus 2 lambda equal minus 2 plus 2 mu. Now put the value of lambda here. From 3 put the value of lambda here. 2 plus 3 mu equal minus 2 plus 2 mu. 2 plus 4 plus 6 mu equal minus 2 plus 2 mu. Now transfer here and this will be transfer here. 6 mu minus 2 mu equal minus 2 minus 6. 4 mu equal minus 8. Then mu equal minus 2. Now find out lambda. Okay, I have no space here, so I am doing here. Now put the value of mu in third. Okay, from third. Lambda equal 2 plus 3 minus 2. 2 minus 6 minus 4. So lambda is minus 4. So put the value of lambda in any one, 1 and 2, any one, either in 1 or in 2. Then find out intersection point. The position vector of intersection point. Okay, put in from 1. आप सेकंड में भी पुट करके देखोगे तो दोनों में सेम ही आएगा, इसलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं.
आप किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी या 2 में भी। तो 3i प्लस 2j माइनस 4k माइनस 4i प्लस 2j प्लस 2k। नाउ 3 माइनस 4 माइनस i, 2 माइनस 8, 4 2 जा 8, 2 माइनस 8 माइनस 6j माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12k। तो मीन्स intersection point is -1 -6 -12. It is your answer. Okay, it is your form of vector form. Okay, understood all of you? Now